Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Ritusha Marke. It's been a lot of days since I have not posted something on my channel and I really wanted to post something. So I am going to post this video. Hopefully I am making that mind. I don't know if I'm going to post it or not. What I am going to talk in this video, I actually have no idea, but I think I'm going to talk about whatever happened till now in my second year. Like, I have not completed my second year, I'm in just mid way of my second year. Like, I have completed half of my second year because I've completed with my first internal. My second internal is scheduled for next month, 5th of May to be prescribed, and that's it. So in this video I'm going to talk about whatever happened till now in my second year. So let's get started. November, December, like November तो घर पे ही गया ज़्यादा, and then we got into December was like ठीक है घर पे, and then college, hostel, a little bit of study and a lot of phone and reels scrolling. After December, January, January में भी इतना कुछ हुआ नहीं, like the same thing was going on. And in February there was our first internal. At that time we really had to study, so तब पढ़ाई करी actually. And after that, just after our first internal was done, there was an event scheduled like 19th of February, and that event was Shiv Jayanti. Last year I participated as a dancer in the inauguration dance, and this time I was the choreographer in the inauguration dance. Like, I was not alone, I was with my few batchmates. We total were 4 people, like me, Vedant, Shubham and Sakshi Khursade. We 4 were in inauguration dance choreography team, and now this time we were not the dancers, our junior were dancers and we were choreographers, and it was nice. Like, the experience was nice. हमारा डांस बहुत अच्छा हुआ. Like, our juniors actually helped us a lot. Like, इतना ज़्यादा उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी. I am ऐसा बोलना ठीक रहेगा आई गेस, बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डांस प्रेजेंट किया. लाइक द वे दे एग्जीक्यूटेड एंड दे परफॉर्म द डांस वॉज टॉप नॉच. लास्ट ईयर मैं डांस कर रही थी, इस टाइम थोड़ा सा अपग्रेशन, लाइक आई गॉट इन टू कोरियोग्राफी एंड या सो आई वॉर अ पिंक ड्रेस जो आई थिंक मुझ पर अच्छा दिख रहा था. Why am I talking this? Sorry, ये बात नहीं करनी थी. Let's move on further. Then we got into March. Yeah, what was scheduled for March? Nothing was scheduled. Like, the same thing, going to college, back to the hostel and stuff like that. And then April, yeah, I forgot to mention, in March I went to a trip kind of stuff. Like, I went to Pune with my family, but there I stayed with my sister and I enjoyed a lot. Like, just me and her, we were roaming around, exploring the streets of Pune, and the markets. It was very nice. Main thing was bargaining, जो मुझे आती नहीं, but मेरी बहन ने करी. We went to a lot of places like Aga Khan Palace and nice cafes. We enjoyed a lot, honestly. And then now comes April. What happened in April? So in April, on 14th of April there is Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti, which in short we call as Bhim Jayanti. So for that purpose, like, we have a cultural, just like we have for Shiv Jayanti. But this time one HOD ma'am, like, उन्होंने कहा कि इस बार कल्चरल नहीं होगा. So there was sports competition. It consisted of like carom, chess, volleyball, badminton, and a lot of like kho, and also much more. And it also had quiz competition, which was for second year, not for first year. And along with that, what was there? Yeah, banner release was there. And the main fantasy which I wanted to tell you from so long, the main purpose of this video, like, on 8th of April, I guess, there was banner release for the Bhim Jayanti.
एंड वहाँ पर आए थे बहुत सारे एच ओ डीज, लाइक एच ओ डी सर ऑफ पैथोलॉजी, एच ओ डी सर ऑफ फार्माकोलॉजी, आर वाइस टेंसर, एवरी वन वॉज प्रेजेंट, लाइक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल वर देयर. एंड उस दैट फॉर बैनर रिलीज, जब बैनर रिलीज हो चुका था, देयर वॉज फायर क्रैकर्स, मतलब फटाके लगाए थे. तो फटाके जब लगाए थे तब आई गेस वन ऑफ द फटाका और द फायर क्रैकर्स गॉट हिट टू द मधुमक्खी का छत्ता. देर वॉज अ लार्ज मधुमक्खी का छत्ता देर, एंड शायद उसको फटाका छू गया. सो इट डिस्टर्ब द होल एनवायरमेंट ऑफ मधुमक्खी, एंड the madhumaki started attacking, the honeybee started attacking everyone. You know, like within 10 seconds everyone got disappeared, like everyone escaped from that place. इतने भागे हैं ना जो, like HODs and students and everyone as seniors and juniors, जैसे भागे हैं जैसे कि कुत्ता लगाया पीछे, to save their selves of course. मतलब इट वॉज वे डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. बट एंड बहुत लोगों को, सीरियस नोट, बहुत लोगों को हनी बीज ने काटा था. आर सीनियर्स, आर जूनियर्स, लाइक आई डोंट नो अबाउट बॉयज़ बट इन आर जूनियर्स देयर वर 4 गर्ल्स, और जो बस 4 ही लोग आए थे, बस 4 ही लड़कियाँ आई थी. होपफुली अच्छा हुआ कि बाकी के जूनियर्स आए नहीं, अदरवाइज़ उन्हें भी काट सकती थी ना मधुमक्खी. सो आई थिंक वो बच गए और मैं भी बच गई, पता नहीं कैसे, बट मैं बच गई. बट मेरी रूममेट को काटी थी, एंड उसको पता है अपर आईलिड पे काटी थी. एंड वो कुछ तो स्टिंग होता है, उस वो जो स्टिंग निकाला ना उसका, देन वहाँ से खून आ रहा था. तो शी वॉज अ लिटिल बिट सीरियस. हमारी एक बैचमेट है समीक्षा, मेरी फ्रेंड, उसे तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी हुई थी. लाइक शी वॉज एडमिटेड फॉर 1 day, like the same day at night, and the other day she was well, like बहुत redness हो चुकी थी, rashes were there over her hand, but eventually just as the night passed वो ठीक हो गई थी, like the redness was gone. And हाँ, तो at that time a lot of seniors like casualty, सारे लोग casualty गए थे. and पता है वहाँ पर जो पेशेंट्स थे कैजुअलिटी में, आई थिंक हाफ ऑफ द पेशेंट वे ओनली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो जो स्टूडेंट्स थे उन्हें IV कैथरेटर लगाया था. बॉयज़ का पता नहीं, शायद बॉयज़ ने लगाया नहीं ज़्यादा तो, पर लड़कियों को IV कैथरेटर लगाया था, एंड थ्रू विच दे गिव हाइड्रोकॉट एंड आई डोंट नो और कुछ तो दिया था. सिंस आई एम नॉट इंटर्न, आई एम जस्ट अ सेकेंड ईयर, आई डोंट नो इनफ ऑफ इट. तो लगाया था, एंड लाइक सीरियसली बहुत पेन हो रहा था. आई सीन माई फ्रेंड्स, माई 2 फ्रेंड्स वर लिजिट क्राइंग. वो पहले से बहुत डरते हैं, वो 2, श्रुति एंड भक्ति, एंड दे वर रियली क्राइंग. एंड सीइंग दैट IV कैथरेटर, भाई साहब और ही रोने लगे थे वो तो. एंड वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, उन्हें IV कैथरेटर लगाया था. एंड फॉर भक्ति यहाँ पर ना उसका बहुत ही ज़्यादा रेडनेस एंड देयर वाज स्वेलिंग ओवर द अपर आईलिड. सो एंड टू अ पॉजिटिव नोट आई वांटेड टू टेल यू दिस ऑल्सो दैट हमारी सीनियर्स एट दिस पॉइंट दे रियली हेल्प्ड अस. पता है क्योंकि लाइक श्रुति को स्कूटी पे हमारे सीनियर्स लेके गए थे टू द कैजुअलिटी, एंड दे वर लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर एंड ऑल द जूनियर्स एक्चुअली. एंड देन वो जो केस पेपर निकालना था वो भी उन्होंने ही निकाला था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ जूनियर्स टू बी ऑनेस्ट. एंड जब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाता था, लाइक till the time they were not given discharge, they were with us. Yes, they were with us. I would really like to thank our seniors. पता नहीं ये सीनियर में कौन देखने वाला है, I guess, I hope no one sees this, but उन्होंने हमारी genuinely बहुत मदद करी, both boys and girls. They really helped us, and
and they were with us at that time. पता है क्योंकि हमें ना like you don't know the hospital that much, right? Because we have just got into clinical posting this year and our seniors have a better experience than us, right? So they know the hospital much better and the environment around it. So they really helped us, and I'm really thankful from all. Like I would like to say thanks from all my batch, all the students of my batch, all my batchmates basically. And what I was coming to the main point, it all felt unreal. Like कोई भी नहीं भूलेगा कि at this point there was banner release and जो HOD sirs and जो students and those seniors and जो juniors भागे हैं, it was like boom. This is the memory. It has like कोई भी नहीं भूलने वाला है. ये एक memory create हो गई है अब हमारे like we have experienced it. It's बता नहीं सकते. It's like at the same time funny also, but at the same time it's like emotional also क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत pain हो रहा था because of that bite of the honeybee, that sting of the honeybee. Other than that, yeah, this happened in 8th of April. This happened on 8th of April, and then for 10th of April there was what do we call it? On 10th of April there was convocation of 2020 batch, and I really wanted to go, but मैंने पहले से ही अपने घर जाने की टिकट करा के रखी थी. I was not knowing that 10th of April को convocation होने वाला है because the time they decided that 10th of April को convocation होने वाला है उससे पहले ही मैंने टिकट करा के रखी थी. तो all of my friends, like most of my friends, went to the convocation and I was at the same time in the train. सभी की स्टोरी देख रही हूँ मैं बस like wow, this story and that story and like congratulations 2020 batch, and कोई यहाँ पर you know मैंगो जूस पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई सीनियर्स के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा है, someone is clicking their picture, सारे स्नैप्स आ रहे थे, everyone was posting their stories and I was like यार मैंने गलती कर दी क्या, मैं नहीं गई. But I think I do not regret that that I was not able to go to convocation because I was coming back to my home. And I think for me it's more important that मैं खुद की सुनूँ, and that खुद की सुनो वाला कॉल मुझे बोल रहा था कि no, it's time to go to home because I really wanted to go home. Like ज़्यादा दिन नहीं हो चुके थे, like 1 and 2 months भी नहीं, 15 ही days हो चुके थे कि मैं घर पर आ रही थी. 15 days के बाद मैं घर पर आ रही थी. But I don't know you know or not, I am kind of homesick और मुझे घर की याद बहुत आती है. And I really wanted to see my parents and my family. So I think I don't regret that मैं घर पर आई. Yeah, of course there was temporary thing that मैं क्यों नहीं गई convocation, but I think I would not regret मैं घर पर आई because I enjoyed a lot in my home, in my house, because here I'm surrounded with people I love the most. Yeah, that's why. That's it. पता नहीं अगर कुछ ज़्यादा बोल दो ना मैं इमोशनल हो जाऊँगी अब. So no drama. बस हाँ, I think. But I know यार, like अगर आप भी सोचो ना कि आपके फ्रेंड्स सारे एक पार्टी टाइप्स जा रहे हैं and you are going home, तो you feel a little bit, right? But at the same time I was happy that मैं घर जा रही हूँ. I'm going and I got all the plans planned for me. मैं आज ये करने वाली हूँ, मम्मी को ये बताने वाली हूँ, like मम्मी you have to cook this for me, आज हम यहाँ पर जाने वाले हैं, I'm going to meet this friend and that person, everything. I was happy and I am happy. Actually I'm filming this video at the same time, like
कॉन्वोकेशन नहीं गई, और उसके बाद में जब मैं घर पर आई थी लाइक एट द सेम डे, तो अभी तक मैं वापस नहीं गई हूँ अपने कॉलेज में, एंड दिस इज़ द सेम टाइम दैट आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो. या दैट्स इट. और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को एक्चुअली. This was the main purpose of my video. I don't know whether you find it interesting or not. Why am I making this video? I'm going to repeat it once again. I just want to create a memory that in my second year where ऐसी दिखती थी, and this was all the thing which happened in my second year. So that's it. Maybe you would love this video, or you would not. You would dislike this video. But honestly, this video was not for you. If you watched, I would really thank you that you watched this video. But the main purpose of this video was the same. Whatever happened, I wanted to describe it and want to get it in one video. So that was it. कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई क्या मैं? ओके, तो क्या करूँ अब? कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स इट. बाय बाय. ऋतुजा मड़के साइन ऑफ. बाय बाय. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. चाचा.